Good morning students. Today we will learn how to draw shapes in Microsoft Word, and today we are going to learn chapter number 4. Name of chapter is Shapes, Graphics and Pictures in Word 2016. Beta, in the previous chapter you have learned how to draw table and how to do formatting and editing inside the table, but in this chapter you will learn how to draw shapes. Now first step is to draw the shape. Click on insert tab. As you can see, there is an option for insert tab. Click on it. Step number 2, click on the shapes in the illustration group. Beta, you can see name of this group is illustration and there is an option for shapes. You have to click on this. Click on the down arrow. Now step number 3, select any shape from the available shapes. You can see this drop down list is coming and you can choose any one shape according to your choice. I'm going to choose this one. This one is of triangle. Choose this one. Step number 4, beta, in this step you have to drag your mouse pointer to draw the shape. So what is the procedure? You should hold the left button of the mouse and drag it. So you can see in this way you can insert a शेप इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस तरीके से किसी भी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ शेप. इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ शेप मीन्स दैट बेटा समटाइम्स इट हैपन्स यू वांट टू राइट any message or any text, then you can use the add text option. आप add text का ऑप्शन यूज करते हैं अगर आपको इमेज के अंदर कुछ राइट करना होता है. तो फर्स्ट स्टेप इज right click inside the shape. Step number 2, select add text option. Beta, you can see add text option is coming here. Click on it. So you can see beta cursor is coming here. It means that you can write anything. Suppose I want to write shape. So beta, in this way you can write any text inside the picture, and after that you can click anywhere on the blank area. So our next topic is changing outline color and thickness of a shape. Sometimes it happens beta, you want to give color to the boundary of the shape. जो भी आपने ये शेप ड्रॉ की है, आप इसकी बाउंड्री को, बाउंड्री मीन्स इन लाइंस को आप कुछ कलर देना चाहते हैं, या फिर आप जो आपको लाइन नज़र आ रही है आप इसकी थिकनेस को बढ़ाना चाहते हैं. देन हाउ कैन यू डू दिस? हाउ विल यू डू दिस? सो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द शेप टू सेलेक्ट इट. सबसे पहले बेटा आपको सेलेक्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन इट. स्टेप नंबर 2, क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब. बेटा देयर इज एन ऑप्शन ऑफ फॉर्मेट टैब. क्लिक ऑन इट. After that you can choose shape outline. Beta, this is an option for shape outline. Click on it. Now you can choose any color. Suppose I am choosing red one. So you can see जो आपने ट्राइंगल की शेप ड्रॉ की थी बेटा, वो आपको ब्लैक कलर की उसके चारों ओर बाउंड्री शो हो रही थी. बट जैसे ही आपने शेप आउटलाइन ऑप्शन को चूज़ किया और वहाँ से आपने कलर रेड सेलेक्ट किया, तो वो ब्लैक की जगह अब आपको रेड कलर में उसकी बाउंड्री शो हो रही है. एंड आफ्टर दैट हाउ टू चेंज द थिकनेस. थिकनेस आप कैसे चेंज करेंगे? Again click on the home tab. First of all select the picture, then go to the format. You can see whenever you move your cursor to the weight option, then you can see many lines styles are coming here. I am choosing this one. So you can see beta, in this way you can change the thickness of any shape.
Beta, next topic is changing the fill color of a shape. Fill color means that you want to fill any color in the shape. So steps are, click on the format tab. First of all, select the image and click on the format tab. As you can see, I have already selected it. Now there is an option of shape fill. It means that कि आप shape को जो आपने ड्रॉ किया आप इसको किसी कलर से fill करना चाहते हैं. Now click on it. So many colors are coming here. I am choosing yellow one. Click on it. So this is the result of shape fill shape option. With the help of it, you can fill your shape with a different color, whatever you want to give. Thank you so much, class.